हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन कोर डेटा का जो एग्जांपल है उसको याद करने का मेमोनिक्स। ठीक है, तो सभी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्रुप है यहाँ पे पोरीफेरा का। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप है पोरीफेरा। तो सारा एग्जांपल इससे याद होगा। पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या याद रखना है? सी यूरोपियन पोर्टल सैंपल। इससे क्या मतलब हुआ? जैसे कि सी यूरोपियन सैंपल, सॉरी पोर्टल सैंपल, सी यूरोपियन पोर्टल सैंपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में क्या लिखूंगा मैं? इसका एग्जांपल में आएगा साइकॉन, सी से हो जाएगा साइकॉन, यूरोपियन से हो जाएगा यू स्पॉन्जिया, पोर्टल से हो जाएगा, याद रखो कि पोर्टल आ रहा है तो ये हो गया पोरीफेरा। ओके, एंड सैंपल से याद रखो स्पॉन्जिला। तो ये सारा एग्जांपल हो गया पोरीफेरा का। सेकंड चलते हैं हम लोग सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा के बाद क्या आता है? सिलेंट्रेटा, COLNTR, सिलेंट्रेटा। इसका एग्जांपल याद रखने के लिए ट्रिक है। क्या है ट्रिक? एडम पास्ट फिजिक्स, एडम फास्ट फिजिक्स गॉट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है? एडम पास्ट मेडिकल कॉलेज, फिजिक्स गॉट मेडिकल कॉलेज। इसमें क्या क्या इसको शो करता है? सबसे पहला एडम से याद रखो कि एडमसिया, एडम से याद रखो एडमसिया। पास्ट से याद रखो पेनिनटुला, फिजिक्स से याद रखो फाइसेलिया, गॉड से याद रखो गॉर्गोनिया, एंड देन मेडिकल से याद रखो मेंडेरिया, मैंड्रीना, सॉरी मैंड्रीना। ओके, एंड कॉलेज specified that this is from the which class? Salentrata. Okay, now third one is that Ctenophora. Third one is that ठीक है, थर्ड वन इज दैट टीनोफोरा। टीनोफोरा में याद रखो 10 प्लस मीन्स प्लस 10। क्या याद रखो? 10 प्लस 10, तीनों प्लेना एंड टीनोफोरा। मीन्स ऐसे इसको याद रखना है। देखो जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 में 10 से शो करेगा स्टीनो प्लेना, टीनो PLANA, टीनो प्लेना। देखो जैसे कि यहाँ पे टीनो प्लेना में 10 आ रहा है, मीन्स टीनो प्लेना। एक टीनो फोड़ा, ये 10 रिप्रेजेंट करेगा क्या? टीनो फोड़ा, मीन्स जो ग्रुप है। ठीक है, प्लस से रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लूरो ब्रैकिया, प्लस रिप्रेजेंट्स प्लूरो ब्रैकिया। नाउ
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट एनेलिडा। एनेलिडा में इसका मिमोनिक्स है अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे। संग लिए फेरे। Anna represents what? Annelida. This represents Annelida. Ne represents Neris. This represents Hirudinoria. Hirudineria and Sanglie. This represents sucking leech. Sucking leech. This represents what? Sucking leech. एंड फेडे से हो जाएगा फेरेटिमा। ओके, दिस इज द एग्जांपल्स। फेरेटिमा इज आल्सो नोन एज earthworm. Ferretima is also known as earthworm. Now next one is arthropoda. Arthropoda. Arthropoda का example, firstly example is that some of the beneficial in firstly beneficial you have to remember beneficial. You have to remember mnemonics like that: honey sing lack means honey sing lack means shortage of honey sing. So like that you can learn. Honey sing means honey sing represents honeybee. Sing represents silkworm. Lac represents lashy fur. Okay, so this is a beneficial. And next one is that vector. Some of the arthropoda represent as a vector. Vectors like, we have to remember like that AV camera. What represent? What you have to remember? AV camera. Okay, AV camera represents what? Means first of all, A represents what? A represents Anopheles mosquito. Anopheles mosquito. Okay, and V represents what? V represents vector, means this is the vector. And camera represents Culex mosquito. Culex mosquito means M represent what? Mosquito. Means if you remember the mnemonics, you already remember all that where they belongs. Like Anopheles mosquito belongs to the mosquito. How does it represent mosquito? Because in your mnemonics you have to AV camera, and camera M comes, means you have the example of what? Mosquito, vector mosquito. Okay, and A represents what? A represents Aedes. So three types of mosquito we have to remember: Culex, Anopheles and Aedes mosquito, where the name comes from the name of the vector mnemonics, vector mnemonics. Okay, some of the organism are gregarious. Some of the organism are gregarious. Which is gregarious? Locust. You have to remember like that. Mostly locust is known as gregarious pest. Locust. And some of the are living fossils. Okay, some of the living fossils जैसे कि limulus. Okay, this is the living fossils. This is the one example. Now
Now the second one is that you have to remember second. Now the next thing is that platyhelminthes. Platyhelminthes. प्लेटीहेलमिंथ प्लेटीहेलमिंथ का मिमोनिक्स है टेक फैसी नेवल फैशियोनेवल प्लेट्स। देखो, टेक फैशियोनेबल प्लेट्स, इसको कैसे याद रखना है? टेक मीन्स टेप वर्म, this is the worm, and fascio means half of the word represents the fasciola. Now the next one is plate. Plate represents what? Platyhelminthes. Okay, plate represents what? Platyhelminthes. Okay, now second one is that Escalmanthus. Second one is that Escalmanthus. Escalmanthus, here the mnemonics like that. Ashish, ask where is cycle? What? Ashish, ask where is cycle? Means Ashish represents the Escalmanthus. This represents the Escalmanthus, and ask represents Ascaris. Means this is the mnemonics like the synonyms you already know. Okay, so where represents what? Where represents Ucraria. Ucraria is, and cycle represents encyclostoma. What? Encyclostoma. Cycle represents encyclostoma. Now the next is mollusk. MOLLUS, mollusca. Next is mollusca. In mollusca there are much more examples, and here the mnemonics is like that. Pila, pink, apple, लो दांत से चबाओ। एंड दांत से चबाओ कब? सितंबर अक्टूबर में। कौन से मंथ में? सितंबर अक्टूबर में। दिस इज द mnemonics. This is the most funny mnemonics, I think. And pila represents the pila, same word. Pink represents that pinnectata. Apple represents the aplysia. Low represents the loligo. Daat represents what? Dentalium. It's also known dent se daat. Dentalium. Cheeto Pluda. Sept represents that septa. Oct represents that octopus, and me represents the what? Mollusca. So this is the mnemonics where you can remember all things that like that. Okay, now next is that echinodermata. Next thing is that echinodermata. Echinodermata you have to remember mostly A B C D E. What? A B C D E. A B C D. A represents what? Asteriasis. Asterias, starfish.
brittle star. B represents the brittle star. C represents that Cumaria, and D represents what? Antedon. Here D represents Antedon. D comes from here. Okay. Now E represents what? Echinus. Here the name suggests Echinus, so one of the example must be Echinus. Name suggests Echinodermata, so one of the example must be what? Echinus. You can also remember like that. Now last one is that Hemichordata. Hemichordata, you have to remember only two example like Planoglossus, Saccoglossus. Two example you have to remember. We have to remember BS, Hemichordata BS. So Planoglossus and Saccoglossus you have to remember like that Hemichordata examples. So this is the two slides from where you can remember all these things. You can take a screenshot once, and the next slide is that in the both slide we finish our the examples of non-chordata in this video. I hope you like these tricks and mnemonics. For more tricks and mnemonics you can subscribe my channel Medico Prime Education. Have a nice day. Thank you very much. Have a nice day.